you still playing for Mumbai or you? No, I've retired long back. हेलो एंड वेलकम। आई एम याशिका गुप्ता, मेरे साथ है वसीम जाफर और फारूक इंजीनियर। और 12:51 हो चुके हैं और अब से सिर्फ कुछ ही देर में यानी कि 40 मिनट में मैच शुरू होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और इसमें यस इंडिया, ओ हमारे दोनों गेस्ट ब्लू पहन के बैठे हैं, बट द ब्लू दैट फारूक सर इज वेयरिंग इज द इंडिया ब्लू। Well, Wasim, Hindustani, that is not India's blue. colors है. It's very close to the blue. वेलकम जेंटलमैन, आप देख रहे हैं बैटरिक 7 एंड CricTracker प्रेजेंट्स रन की रणनीति और इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच, उसके बारे में हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले मैच हुआ श्रीलंका और आयरलैंड के बीच में, और ये मुकाबला वन साइडेड मैच था क्योंकि आसानी से श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया। पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड ने 128 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, लेकिन श्रीलंका ने ये मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। सिर्फ 1 विकेट खोया और कुशल मेंडिस ने जो है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, संभल के उन्होंने पारी खेली और आसानी से टीम को जीत भी दिला दी। श्रीलंका बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है क्या इस वर्ल्ड कप में भी वसीम? डेफिनेटली, बट ये हमको ध्यान में रखना होगा कि वो एशिया कप चैंपियंस है। इवन दो वो फर्स्ट मैच हार गए थे अपने क्वालिफाइंग मैच में, बट उसके बाद में बहुत अच्छा कमबैक किया जो कि एक्सपेक्टेड है उनसे। और अगेन जब ये नॉर्मल जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, अगेन एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आयरलैंड के सामने, जो कि आयरलैंड एक थोड़ा सा मोमेंटम लेके आ रही थी, बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। तो श्रीलंका आईसीसी इवेंट्स में उनको आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हुआ होगा एशिया कप जीतने के बाद में। और जो यंग प्लेयर्स है, बहुत सारे ऑलराउंड ऑप्शन है, मैच विनर्स काफी निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल से स्टेटमेंट अपने पहले जीत के साथ। बिल्कुल, और इन्होंने अपने काफी सारे की प्लेयर्स को मिस भी किया आज के मैच में। बड़े बड़े नाम नहीं थे, इंजरीज से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आयरलैंड को आसानी से हरा दिया यहाँ पे। चलिए, पहला मैच तो दिन का हो चुका है खत्म, लेकिन आज है ब्लॉकबस्टर मुकाबला, आज है सुपर संडे, क्योंकि बड़ा मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब से कुछ ही देर में टॉस होगा और पिछला मुकाबले का जो बदला है फारूक सर, वो हमें लेना है। पिछले बार जब हम वर्ल्ड कप में ही हारे पाकिस्तान से, आई थिंक पूरे रिवेंज के साथ इस बार इस माइंडसेट के साथ टीम इंडिया उतरेगी मैदान में। Oh, सब bygones, let bygones be bygones बोलते हैं ना। Today is a fresh start. It's a big game to start with, for India, also for Pakistan. Depends upon the team selection. I hope we are playing Rishabh Pant in the team instead of Dinesh Karthik. I don't know what the team selection is, but at least my preference would be Rishabh Pant because he's experienced in Australia. He's got runs in Australia. He enjoys playing on those bouncy Australian pitches. And I think the Australians would rather see, Karthik in the team than Pant, because Pant has demolished them not too long ago. But a lot will depend upon our fellow Mumbaikar, Wasim Suryakant Yadav. I think he is an absolute trump card, and if he gets going, he will, मुझे नजर नहीं मारना ऊपर बोलते हैं ना, but let's hope he's the trump card for India. Of course, Rohit Sharma is a very experienced captain, captaining to major wins before, captaining a T20 for Mumbai Indians. So the captaincy will be a very important issue. And he's a very experienced captain. If the game is shortened due to weather, God forbid, I don't know what the weather is in Melbourne at the moment. They were saying that it's going to be iffy. So he is the man. अभी फिलहाल जो वेदर अपडेट्स में देख रही थी फारूक सर, it's overcast there, but the chances of rain is just 30%.
which is a good news because Well, till yesterday overcast, good around news 70%. and bad news. And bad. If Pakistan win the toss and put India in, the overcast conditions will certainly suit their quick bowler Afridi, who's the main threat. But we've got Okay. batsmen to cope with that and all that. So let's see. Inshallah, may the best side win. But I hope the game is played in good spirit and in sporting thing as players. Even if the countries don't get along, the players certainly have mutual respect for each other. So let's hope it's a great game of cricket. अभी फिलहाल जो अपडेट आ रहा है क्लियर ब्लू स्काई है, तो मैच पूरा होना चाहिए, बारिश ना हो, सब यही चाहते हैं। वसीम, फारूक सर ने जो शुरुआत करी दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत, इस डिबेट का क्या क्लियर आंसर आपके पास है? आप किसके साथ जाएंगे? मैं एक्चुअली दिनेश कार्तिक के साथ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा फारूक सर से, क्योंकि ऋषभ पंत इन T20 इंटरनेशनल ही इज नॉट स्ट्रक द सेम फॉर्म which he's got in test cricket or one day cricket, or Dinesh Karthik has played that finisher role really perfectly. So why change something which is not broken? मेरा वो mentality है, just playing a left hander for the sake of left hander. मुझे लगता है कि that is the mistake we made in Asia Cup. जब रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए, we just because we wanted a left hander, हम लोगों को 2 force changes करने पड़े थे वहां पर. So I think we should stick to Dinesh Karthik because he's doing that finisher's role really well. Even though we don't have a left-hander in the top order, so be it. They all are quality players. Surya Kumar Yadav, Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul. So they all are quality players. So just because you want a left-hander, I don't think we need to put somebody for the sake of it. But Wasim is not only because he's a left-hander. He's got runs against the Australian bowlers, the very same Australian bowlers. In fact, he's absolutely... Yeah, I mean, that's exactly what I'm saying, Farooq sir. So he's got runs in Test cricket, he's got runs in one-day cricket, but he has not stuck the same form in T20 international. Karthik is a very competent wicketkeeper. There is very little to choose between them. But I think if I was a selector, I would give the nod to Rishabh Pant ahead. But this is the whole idea of discussion when people don't necessarily have to agree with each other, but it's what is good for the country. So I don't know. Have they selected the team? Have they announced the team? Not yet. अभी फिलहाल तो नहीं हुई है टीम. I'm sure they'll have the जैसे ही आएगी वैसे ही हम आपको प्लेइंग 11 दिखाएंगे आपको. जैसे ही आएगी प्लेइंग 11, बस 1 बजे टॉस हो जाएगा. अभी फिलहाल फिर से जो अपडेट वेदर को लेकर आ रहे हैं, अभी फिलहाल फिर से थोड़ा सा जो है क्लाउड्स आ गए हैं एमसीजी के ऊपर. काफी लुका छिपी खेल रहे हैं बादल वहां पर एमसीजी में. बट आई होप पूरा गेम हो वहां पर. अब जो बात कही यहाँ पे फारूक सर ने, ऑफ कोर्स वी हैव स्पोकन अबाउट वेदर वन शुड गो विद दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, लेकिन सूर्य कुमार यादव, योर फेलो मुंबईकर, बाबर आजम का अभी फिलहाल मैच से पहली स्टेटमेंट है कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट नहीं बल्कि हमने सबके अगेंस्ट प्लान बनाया है. कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आज के गेम में पाकिस्तान उतरेगा वसीम, नोइंगली कि उन्होंने हमें पिछली बार हराया था? Well, I think confidence तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है याशिका. द लास्ट 3 गेम जो हम खेले हैं उसमें से 2 पाकिस्तान जीता है, और प्लस थोड़ा सा मुझे लगता है कंडीशंस विल फेवर देम. जैसे हम जानते हैं कि विकेट्स थोड़ा सा अंडर कवर है, थोड़ा सा ओवरकास्ट है, तो उनके फास्ट बॉलर्स विल बी उनके लिए थोड़ी सी हेल्प होगी. अगेन सेइंग दैट अगर इंडिया टॉस जीतता है और इंडिया को बॉलिंग मिलती है तो सेम गोज विद इंडिया. इंडिया के पास न्यू बॉल के बहुत अच्छे बॉलर्स है, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, आई डोंट नो कौन खेलता है, बट इफ वी गेट देम 3 डाउन फॉर नथिंग, इंडिया के पास अपर हैंड होगा. और उनके वी ऑल नो कि उनके मेन प्लेयर इज बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. इफ यू गेट दोस 2 guys आउट, उनका मिडल ऑर्डर विल बी एक्सपोज्ड व्हिच इज नॉट वेरी एक्सपीरियंस. तो इट कैन गो वेरी other way. So toss मुझे लगता है will be very very important. Any team that wins the toss will look to field first and get that advantage of bowling first. Well, this is where I agree with Wasim wholeheartedly, that India have got to get the 2 openers out, the 2 world-class openers. Babar Azam is certainly a top class batsman, and Rizwan. These 2 are the most crucial wickets that
that India have to get, because the middle order, apart from being inexperienced, they're not up to that high quality standard. But T20 over में तो कुछ भी हो सकता है. One bad over here and there, you give 15 runs or something, and that could make a big difference between winning and losing. So, I mean, a good captaincy will be crucial. And I think this is where Rohit Sharma would be a better captain than Babar Azam. But as Wasim says, the toss will play a very crucial factor. And the opening few overs, I think will decide literally which way the match is heading to. After the toss, the conditions, Afridi is a class bowler, in my opinion. He's got the best of batsmen out. So India will have to, they usually target a certain bowlers. Like, for example, Afghanistan targeted Sam Curran, thinking that he's the weakest bowler. And what happened? Sam Curran gets 5 wickets for 10 runs. So, I mean, anything can happen in T20 cricket. But we've got opening bowlers. India has got opening bowlers in Bhuvaneshwar Kumar, Mohammad Shami. We're going to miss Jasprit Bumrah big time. That's without a doubt. But the rest is yet to see. Let's see the team selection. Let's happen who wins the toss and who does what. These are all speculations that we got to wait to hear from you, Yashika. वसीम, जसप्रीत बुमराह की बात करी फारूक सर ने, हमें बहुत बड़ा एक सेटबैक था ये टीम इंडिया के लिए जब वो पता चला कि नहीं पार्ट होंगे T20 वर्ल्ड कप का. लेकिन हमारे पास मोहम्मद शामी है. मोहम्मद शामी के पास क्या प्लान है अगेंस्ट पाकिस्तान बैटर्स? Well, first of all, Yashika, the question mark is कि मोहम्मद शामी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस मैच में नए बॉल से बॉलिंग नहीं कराई गई थी. So, probably the think tank might be thinking of not playing him. They only gave him 1 over, which is the last over of the innings, and he got 3 wickets. He made India win that match in that last over. So I don't know. I would like Mohammad Shami to play because he can get the best batters out with that new ball. So I hope they go with Mohammad Shami because he's one of those bowlers who batters don't want to face, especially with that new ball. If the ball is moving around, and which will happen at MCG, the ball will swing around in the first half, and he can get 3 for nothing in a very quick time. So I hope the Indian team selects him. And Mohammad Shami is like I said, he's one of those bowlers who hits that length. He bowls 140. And India doesn't have many bowlers right now because Jasprit Bumrah was the only one who could bowl 140. India doesn't have anybody to bowl in that speed. Well, Wasim, so, we just got news that India टॉस हो चुका है. हाँ, टॉस हो चुका है. भारत ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग कर रहे हैं. Half the battle won, Farooq sir? Well, one means half the battle will be won when we get those 2 opening batsmen out. That's the main thing. Of course, I agree with Wasim that Mohammad Shami should play in the seeming conditions because he's perhaps he and Bhuvaneshwar Kumar are the 2 best swing bowlers around, and Bhuvaneshwar Kumar will certainly be playing. But I'm surprised that Mohammad Shami got only 1 over in the practice game. I'm very surprised to hear that. I didn't know that, but according to me, he should play also. So let's see what the teams are going to come. But the main thing is India have won the toss and chose to bowl first, which is a very, very good decision, I think. इनफैक्ट अभी फिलहाल जो वहां से तस्वीरें आ रही थी, विराट कोहली जो है एमसीजी में पूरी टीम के साथ पूरी टीम को पेप टॉक दे रहे थे और ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो कि दिख रही है एमसीजी से. हमें बहुत जरूरी होता है ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स का, somebody like a विराट कोहली जो कि अब एक सीनियर प्लेयर है टीम में, वो टीम के यंगस्टर्स के साथ इकट्ठा हो और उन्हें पेप टॉक दे. लेकिन अब पिछला मैच अगर हम देखें तो रमीज राजा ने कहा था कि उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था अगेंस्ट रोहित शर्मा. द प्लान वाज टू ब्रिंग शाहीन आफरीदी, पहले लेकर आए और रोहित का विकेट ले, और ऐसा हुआ भी. क्या इस बार पाकिस्तान के जहन में होगा वसीम? क्या प्लानिंग के साथ इस बार वो उतरेंगे मैदान में? Well, याशिका, जब प्लानिंग उसी वक्त होती है जब आपका आप विकेट लेते हो. जब आपको पहले ओवर में 2 या 3 चौके लग जाते हैं तो सारी प्लानिंग आउट ऑफ द विंडो चली जाती है. तो once you start scoring,
all plan fails. So there's no such plan as कि Shaheen Shah Afridi is going to bowl the new ball. He's going to bring the ball in. इसमें कोई rocket science नहीं है. He's expected to bowl that full ball, fast ball. It's just that he bowled that spell really well in the last time. This time round, I feel he'll be a little rusty. He hasn't played a lot of match, and India will be better prepared than the last time. And again, India has won the big toss. I feel the so I won't say half the battle won, but at least 60 to 65%. I feel India, has a little bit of advantage going into this match. Yeah, Yashika, one thing that if Pakistan has made a plan for Rohit Sharma, I'm sure Rohit Sharma has made a plan against the Pakistan bowlers as well. So one plan to counteract plan A nahi chala to plan B to tayar hona chahiye. You know, and as Wasim rightly pointed out, if a couple of wickets fall, the plan goes by the board completely. So I mean, all these plans are made in mind. Okay, it's a mind game as well, but the actual thing is happening in the middle of the pitch where all the action is, and who knows? Only the Almighty knows what is going to happen. Otherwise, we don't be geniuses. We can give But yeah, expert more comments as interested in opinions. knowing what Virat Kohli actually must be talking to his teammates. अगर आपको वसीम मौका मिले, अगर आपको कोई पेप टॉक देना हो अपनी इंडियन टीम को बिफोर द बिग क्लैश, क्या क्या कहते हैं कप्तान अपनी टीम से? I think you only talk about the positive. That is the only thing. And knowing Virat Kohli, he'll only be talking, the positive stuff. You don't want to talk the losses. You don't want to talk what their strength is. You just play to your strength. आप अपनी strength के बारे में बात करो. आप अपनी strength पे खेलो. You don't worry about the opposition. Obviously, Pakistan is a good team, but you don't talk anything negative. And that's all probably Virat Kohli will be talking. Put the right foot forward and just think about the positives and think about winning the game, nothing else. Yeah, absolutely. You tell them to build their confidence, to play to the best of their abilities and not be nervous. Just treat it like any other game. Okay, it's a big match, but you can only do your best. Give your best 100% for your country. You don't have to be motivated. There is enough motivation that you're playing for India or you're playing for Pakistan. That is enough motivation. So nobody has to tell you. Everyone knows their responsibilities. Everyone knows they've got to give their best. You just build up the players' confidence that come on, chhati khol ke desh ke liye khelo. That is the only thing. They all know their respective roles, what to do. Rohit Sharma knows as a batsman, as a captain, what to do. So does Virat Kohli. So does the bowlers. So each one knows what they have got to do on the cricket field. This is just to build up their confidence. The puri chhati khol ke jao under. Your body language should be good, and go out there with one thought of winning, and that's all. इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको बता देती हूँ. रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी एंड अर्शदीप सिंह. यानी कि आज के मुकाबले में ऑफ कोर्स ऋषभ पंत तो नहीं खेल रहे, दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं एंड युजवेंद्र चहल भी नहीं है. अश्विन को लाया गया है, मोहम्मद शामी है और अर्शदीप सिंह है. आर यू हैप्पी विद द टीम वसीम? I'm pretty happy to be honest. मुझे एक चीज अच्छी लगी है कि अश्विन को मौका दिया गया है क्योंकि knowing बाबर आजम और even रिजवान, they've got a very poor record against the off spinners. और यजवेंद्र चहल को they don't get out. और उनके पास थोड़े लेफ्ट हैंडर्स भी है. उन्होंने शुरू में फकर जमान है, उसके बाद उन्होंने नवाज को भी बीच में भेजा था, शान मसूद आएंगे. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि रवि अश्विन इज प्लेइंग. और एमसीजी इज अ बिग ग्राउंड, सो द स्पिनर्स को छक्के मारना इतना आसान नहीं होगा जितना सब कॉन्टिनेंट में होता है. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. और उसके अलावा अश्विन के खेलने से, अक्षर के खेलने से आपकी बैटिंग लाइनअप भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है. यू हैवंट गॉट अ लॉन्ग टेल. So I think it's a good selection. Shami is playing, which is a good thing. Shami, Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep. I think it's a good fast bowling attack with Hardik Pandya as a fourth seamer. I think it's a good team. I think this game will be decided more by seam because the conditions are
seamer friendly. So we got the three very good spinners. Arshdeep Singh is a very good inclusion, Bhuvaneshwar Kumar, and I'm so glad they've included Mohammad Shami in it, because definitely if the conditions are seaming and swinging, these three should be there. There I would completely agree. Is Chahal playing, is Ashwin No, playing instead of Chahal? Ashwin Yeah, is I playing mean, Yeah. instead of. Ashwin is a very experienced bowler. Pakistan have not got a very good record against off spin. But for me, Chahal is a match winner. He's a wicket taker. But I don't think the spinners will play a great part today, because the seamers, with India having four seamers, we just got to bowl from one end, and Ashwin is more than capable of doing that. So yes, I'm quite happy with that. Had it been a test match, I would have certainly preferred Chahal to be in, but again, the think tank have preferred to take Dinesh Karthik. They must have good reasons for it. Wasim made a very good thing that he's worked on his finishing very well. But I would have just thought that Australian bowlers, Australian bats, would have feared more Rishabh Pant than Dinesh Karthik. But the think tank have made a decision. Let's stick by it, and mashallah, it'll be a great game. Yes. चलिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तो बस 20 मिनट में और ये गेम शुरू होने वाला है, लेकिन व्हाट अबाउट एशिया कप जो अगले साल मना किया है भारत ने जाने के लिए? वसीम, मैंने फारूक सर से तो कल इस बारे में बात भी की थी, लेकिन शुड इंडिया गो टू पाकिस्तान फॉर द एशिया कप? आपकी क्या राय है? वेल आई थिंक इंडिया का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है याशिका, वो इंडिया के अंदर है 2023 में. And if India is hosting it, then obviously India expect Pakistan to come and play here. Then if the Asia Cup is hosted in Pakistan, then obviously India needs to go to Pakistan. Otherwise, obviously they'll refuse to come to India also. So that's even more trouble. So this is beyond us talking. It is about the government to obviously decide. But I think it will create more problems. क्योंकि अगर इंडिया नहीं जाता है, तो obviously they'll decide to not come to India. So I don't know. It's a very tricky one. But I think, like we all sportsmen talk, yeah, politics should be left aside, and the sports के जो events है वो होने चाहिए. ICC events में तो हम खेलते ही हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू पे होता है. So why not, we go there and they come here for the sporting events. इनफैक्ट वहां से रिएक्शन भी यही आया है कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे पाकिस्तान से. तो आपको क्या लगता है, ये अभी गहमा गहमी में बोला जा रहा है ये बयान, या फिर और डू दे हैव दिस ऑप्शन ऑफ नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप? Well, I don't know. It's for the the ACC, the Asian Cricket Council to decide, or the ICC to decide कि क्या करना है. Whether if India doesn't go there, then what happens? Whether that tournament is shifted to neutral venue, और इंडिया के अंदर जब वर्ल्ड कप होगा तो जो पाकिस्तान के मैच होंगे जो इंडिया के अंदर, तो what happens to that? So I think they have to take a call. But like I said, the fans, the cricketing people, they want to see India-Pakistan play, obviously. So अगर ऐसा होता है कि इंडिया नहीं जाता है और मैच नहीं होता है and they don't come, then obviously that is not a nice scenario. I don't think Pakistan will agree to play at a neutral venue, because Pakistan need the resources. They need foreign teams to come and play in Pakistan. They've been deprived of cricket for such a long time. But the irony is that the Jay Shah, he's the president of the Asian Cricket Council, so they've asked for an urgent meeting of all the nations. So let's see what they decide. As Wasim said, politicians, are politicians and cricketers are cricketers, and it's dangerous to mix the two. चलिए, हमारे जितने भी व्यूअर्स अभी फिलहाल हमारा शो देख रहे हैं, प्लीज आपकी अगर कोई राय है, अगर आपकी कोई सवाल है, तो आप मेंशन कीजिए क्रिक ट्रैकर को और हमारा हैशटैग जरूर यूज कीजिए, #BadBrick7, और आपके सवाल हम यहाँ पर लेंगे. और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है हमारे स्पेशल सेगमेंट सोशल ट्रैकर प्रेजेंटेड बाय क्रिक ट्रैकर. तो कुछ ट्वीट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं. भाई, क्रिक क्रेजी जॉन्स ये पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया. गुड न्यूज, ब्लू स्काइज एट एमसीजी. अभी फिलहाल जो है मैदान बिल्कुल साफ है. रिजवान कह रहे हैं
दिव कह रहे हैं रिजवान ऑलरेडी स्टार्टेड अपीलिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये मैच तो बहुत ही हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। विराट भाई को मैसेज करते हुए महेंद्र सिंह धोनी, मैच से पहले एक बार बात कर लेता हूँ विराट से। हाँ, ये एक्चुअली बहुत बहुत ही अच्छा ट्वीट है, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू भी आया बस कुछ ही देर पहले विराट कोहली का, और उन्होंने एमएस धोनी के बारे में बहुत बात की है। उन्होंने कहा कि जब हमने एक्चुअली पहली बार जब वर्ल्ड कप जीता, दूसरी बार जब हमने वर्ल्ड कप जीता, तब मुझे पता नहीं था 2011 में कि वो एटमॉस्फेयर क्या होता है। यू नो, आई वाज अ जूनियर प्लेयर, लेकिन सीनियर प्लेयर का जिस तरीके से युवराज भज्जी जो रिएक्शन कर रहे थे, वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे पता है कि उसके मायने क्या है। सो विराट कोहली इन ऑल सेंस ही इज एक्चुअली बिकम अ सीनियर प्लेयर ऑफ द टीम। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन उस टाइम पे वो बेबी ऑफ द टीम थे, प्रोबेबली यंगेस्ट प्लेयर थे। जस्ट 2010 में शायद उन्होंने डेब्यू किया था। और जब कोई 10-15 साल से खेलते आ रहा है और वो कई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला है और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं जीता है, देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस। और आप पहली बार खेलते हो और चैंपियन हो जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि ये क्या फंस हो रहा है। नाउ ही ऑब्वियसली रियलाइजेस कि इतने सारे वो भी वर्ल्ड कप उसके बाद खेल चुके हैं और अब नहीं जीते हैं, तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू होल्ड ऑन टू दैट ट्रॉफी अगेन। तो अगेन ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट फीलिंग होता है जब आप किसी चीज के पीछे भागते रहते हो, आपको नहीं मिलती है। तो ऑब्वियसली अब वो सीनियर प्लेयर्स है, तो ही प्रोबेबली विल रिएक्ट द सेम वे एज प्रोबेबली दो सीनियर प्लेयर्स डिड दैट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, एक स्टैट भी है, ये है कि अगर हम पिछले 6 मैचेस उठा के देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 आईज में ही, तो दे ऑल हैव बीन वन बाय द साइड चेजिंग विद कैप्टन्स विनिंग टॉस ऑप्टिंग टू फील्ड फर्स्ट एवरी टाइम। तो इंडिया विनिंग 4 टाइम्स एंड पाकिस्तान ट्वाइस, ऐसा स्टैट्स हुआ है। तो यानी कि आज भी अगर आप देखें तो काफी इंडिया के विनिंग चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं टॉस जीतने के बाद। फारूक सर? जी हाँ, बिल्कुल। टॉस टॉस तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एनी टीम जो टॉस जीतती वो पहले बॉलिंग ही करती, क्योंकि पिच इतना टाइम से अंडर कवर है। तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी फास्ट बॉलर्स को। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड टॉस टू विन। बट ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम बात करते हैं, जितना सब कॉन्टिनेंट में या फिर इवन यूएई में जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत सारे मैचेस टॉस पे डिसाइड हो रहे थे। बट आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया में शायद ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ड्यू फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो सेइंग दैट टॉस जितना वाज इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक इंडिया को अच्छा बॉलिंग करना होगा, अच्छे स्कोर पे पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, और अगेन हैव टू कम बैक एंड बैट वेल। तो आई डोंट, जैसे मैंने पहले कहा कि हाफ द जॉब इज डन, 60-65% एडवांटेज इंडिया है, बट अगेन यू हैव टू गो आउट एंड प्ले वेल। See, all those Okay. stats and all that have happened before, forget all that. Today is the new day. It's a new pitch, fresh pitch. India have got 3 of the finest swing bowlers in their armory. Pakistan's strength is the 2 opening batsmen. So that is the main thing. If the Indian bowlers put the ball in the right areas, they will surely trouble even the 2 great batsmen that Pakistan are. And these 2 wickets are so crucial for India to win. If they get Babar Azam and Rizwan out early, then they're not 3/4 there. They're almost, there, because the middle order is not as good or as experienced as the above 2. Pakistan are heavily dependent upon the 2 opening batsmen. So it's a huge advantage for India winning the toss. Now the bowlers have got to put the ball in the right areas to trouble Babar Azam and Rizwan, because they'll be going for the shots. They've got to get runs on the board. They won't be playing just to, prevent the wicket from getting out. And if they try playing shots against good swing bowling, and if India hold their catches, then certainly they'll be in a good position. But that is the main thing. Whatever has happened in the past, stats and all that, okay, that's for the statisticians. But for cricketers, we'd like to see what is going to happen today on the pitch. It's a fresh pitch. बोलते हैं नई गिल्ली नया दाव. So गिल्ली डंडा खेला है क्या ना आप लोग ने? Iti Dando used to play in the other Parsi colony in Bombay. So India's 3 swing bowlers will make a huge difference against the 2 great Pakistani opening batsmen, and that is a battle worth going miles to watch. So only time will tell.
बिल्कुल, बैटल तो ये बहुत बड़ा है, ये वॉर भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, बट एक बैटल चल रहा है ट्विटर पर भी, हमारा कॉन्टेस्ट जो है, और कॉन्टेस्ट का सवाल क्या है आपके लिए वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। कॉन्टेस्ट ये है, प्रिडिक्ट द टॉप स्कोरर फ्रॉम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। आप बताइए हमें, ट्विटर पर जाइए और कमेंट कीजिए हैशटैग यूज करके बैटब्रिक7 और हमें मेंशन कीजिए क्विक ट्रैकर पे, और डेडलाइन है 1:30 बजे। ऐसा ना हो कि बैटिंग हो जाए और उसके बाद आप हमें बताएं, क्योंकि हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। और साथ ही आपको पोल भी दिखा देते हैं, और पोल में किसको मिल रहे हैं ज्यादा वोट। मोस्ट रन इन टुडेज गेम, सूर्य कुमार यादव 80% और मोहम्मद रिजवान को 20%। वाओ, ये बहुत प्रेशर डालेगा क्या सूर्य कुमार यादव पर? वो देख तो नहीं रहे हैं यहाँ पे, The लेकिन pressure is certainly on नहीं Surya नहीं Kumar Yadav because he knows he's the finest stroke player. But don't forget, by playing strokes against good bowling, he's taking risks as well. And if Pakistan fielding is good, Pakistan fielding has been terrible when I've seen them before in earlier games. And if their fielding lets them down and their bowling is so good, I mean, they've got themselves to blame. So Pakistan have got to hold their catches. In the last game, we saw quite simple chances being dropped, quite simple run-outs being missed. Now they've got to rectify that. I'm sure they must have worked on that because they know that is the weakness, and that will play a very important part today. But certainly, 80 and 20%, I wouldn't. Rizwan is not that bad a player, compared. Rizwan is a terrific player in my opinion. He's a very, very good, and so is Babar Azam. So I mean, to give the 80-20% is very flattering for Suryakant Yadav. I'm a Surya fan, huge fan of Surya, but the array of strokes that he's got and the confidence he's got, but the more risky strokes that he's playing, the more chances he's taking to get out, So I mean, the pressure certainly is with him, but he's India's trump card. He has been for the, to be the highest scorer. So let's hope he keeps up to his reputation. But don't forget, India have got some great players like Rohit Sharma, Virat Kohli. You're forgetting one of the finest batsmen in the world. चलिए, अच्छी बात है कि दोनों टीम्स अभी जो है मैदान पर है फारूक सर, और 80% वोट क्योंकि सूर्य कुमार यादव को मिले, तो ये हम 80% is a bit too high, I think. No? वसीम भाई, आपका तो अच्छा दोस्त है सूर्य कुमार यादव, तो आप बता भी सकते हैं 80% वोट मिला था तुम्हें भाई। अच्छा बैटिंग। The 80% is a bit too high compared to Rizwan. क्योंकि वोट याशिका वोट करने वाले हम सारे इंडियंस ही हैं, तो ऑब्वियसली इंडियंस को ही ज्यादा वोट मिलेंगे। That is a valid point. I'm sure if the votes were in Pakistan, Babar Azam and Rizwan. Mohammad Rizwan is a class player, and we hope कि एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिले, क्लोज कॉन्टेस्ट हो, मजा आए मैच में। और क्लोज कॉन्टेस्ट के साथ ही हम शो भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि मैच एंजॉय करना है। थैंक यू वसीम, थैंक यू फारूक सर हमारे से जुड़ने के लिए, और जैसे ही मैच खत्म होता है हम वापस आएंगे क्रिक ट्रैकर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।